Hello everyone, how are you all? So in this video I am going to share picture description 2 in English 1 and that is a garden. Okay, तो मैंने बताया था that क्या करना होता है आपको, you have to look at the picture first then see the characters. Okay, you can just write कहीं पे आप ये सारे जो objects है like trees are there, children are there, okay, a doggy and a cat, then a hen, okay, then a house, sun, birds, parachute. So ये सारे क्या करो आप एक जगह पे, जैसे pond is also there, fish are there. तो ये सारे जो objects है just note it down somewhere और उसको लेके फिर you have to frame the sentences. This way you can write the picture description. Okay, so चलो यहाँ पे भी हम ये वाला solve करेंगे. I'll be writing the questions. ठीक है, here मैंने लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट शुड बी द फर्स्ट लाइन, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ और द नेम ऑफ द पिक्चर. क्या है नेम ऑफ द पिक्चर? अ गार्डन. सबको लिखना पड़ेगा दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस विल बी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन. ठीक है, फुल स्टॉप. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन. नाउ सेकेंडली क्या दिख रहा है यहाँ पे? सो देखो, देर आर सो मैनी चिल्ड्रेन, सो मैनी ट्रीज, है ना, एंड सो मैनी एनिमल्स ऑल्सो, है ना. इवन दैट बर्ड्स आर देयर, इंसेक्ट्स आर देयर, देन एनिमल्स आर देयर. तो सब जगह सारे कुछ है, तो हम इसको एनिमल्स ही लिख देंगे बिकॉज ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन एनिमल्स कैटेगरी ओनली. ओके, सो विल बी राइटिंग देयर आर many children, comma, trees and animals in the garden. Full stop. Okay, let us move to the third sentence. Now here what the children are doing, बेटा बच्चे क्या कर रहे हैं? So the children are playing hide and seek in the garden. देखो यहाँ पे ये लड़का जो है वो कर रहा है, उसका टर्न है and these are running for hiding. Okay, so let us write it. The children are playing hide and seek. Okay, SEEK, hide and seek. 1 minute. Hide and seek in the garden. Full stop. ठीक है, चलो let us write fourth one. Now as you can see that a sun is there, है ना, sun is shining in the sky. So the same sentence you can write it. The sun is shining brightly in the sky. The sun is shining brightly in the sky. Full stop. ठीक है, let us write the fifth sentence. Now as you can see that a tiny house is there near the garden. ठीक है, एक घर भी है. Okay, you can write it like the house is also there behind the garden. वो garden के पीछे की तरफ है, तो वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, so let me write the fifth one. A tiny house is there. A tiny house is there near the garden. Okay, full stop. There is a tiny house is there near the garden. Okay, no doubt some more sentences are also there. So for that I am just turning the page. Okay, I'll be writing the sentences, but whenever you will be getting the physical exercise sheet, मतलब इस exercise sheet की जब print out ले लोगे ना, उसके साथ you can understand the each and every line. ठीक है, चलो I am turning my page. Now number 6. There is a beautiful pond in which tiny fish are swimming. Okay,
there is a beautiful pond in which tiny fish are swimming. Here I have written fish only, okay, because as you can see that so many fish are there. हम उसको fish को fishes नहीं बोल सकते, okay. The plural of fish is fish itself. तो जस्ट इसको याद रखना. There is a beautiful pond एक बहुत अच्छा तालाब है गार्डन में, in which tiny fish are swimming, जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही है. Okay, let us move to the 7th sentence. Now, 2 butterflies are flittering over the flowers and the birds are flying in the sky. Let me write it and then I will explain the same. 2 butterflies are flittering over the flowers and the birds are flying in the sky. मतलब कि यहाँ पे देखा होगा आपने दैट जो बटरफ्लाइज है वो फ्लावर्स के ऊपर फ्लिटर कर रहे हैं. फ्लिटर करना मतलब फ्लाई करना, ठीक है. ऐसे फ्लावर्स के ऊपर राउंड में वो लोग फ्लाई करते हैं ना, वही वाला फ्लिटर करना मतलब ऐसे अपने पंखों को फफड़ा के वो लोग फ्लाई करते हैं ना. सो दैट इज कॉल्ड फ्लिटरिंग. ओके, ओवर द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. और जो बर्ड्स है वो उड़ रहे हैं स्काई में, ठीक है. नाउ 8 नंबर. A small beautiful parachute is also there in the sky. Okay, a small beautiful parachute की स्पेलिंग देखना बेटा. PARACHUTE, parachute. A small beautiful parachute is also there in the sky. Okay, let us move to the 9th one. One boy is running with a puppy and a cat is also there behind the bushes. Okay, they are hiding themselves. Okay, so let us rewrite it and then I will explain it. One boy is running with a puppy and a cat is also there behind the bushes. Full stop. They are hiding themselves. They are hiding themselves. Full stop. Now सुनो. One boy is running with a puppy. मतलब एक लड़का पपी के साथ दौड़ रहा है and a cat is also there behind the bushes. और अगर आपने देखा होगा तो झाड़ियों के पीछे एक बिल्ली भी है. They are hiding themselves. मतलब वो लोग अपने आप को छुपाने के लिए भाग रहे हैं because they are playing hide and seek. So here as you can see that all the animals, all the children are playing together. सब कोई अपने सबके साथ खेल रहा है. Okay, which is a very nice thing only. Only the children can do that. Now the last, that is 10th, is the children are enjoying the pleasant and sunny day. Okay, which is not there in the sentence, but यहाँ पे you have to imagine that कि oh no doubt you can see that also in the picture that each and every children or each and every child is enjoying the pleasant and the sunny day. Okay, so let me write the same sentence. The children are enjoying the
pleasant and sunny डे, फुल स्टॉप। ओके, मतलब बच्चे जो प्लीजेंट, इतना खूबसूरत दिन है, सनी दिन है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो दिस आर द सेंटेंसेस। यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर, नो डाउट इन बोथ द पिक्चर डिस्क्रिप्शन यू हैव टू रिमेंबर that the picture description can be in simple present tense, means मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है it can be in simple present tense or the present perfect tense or the continuous tense, present continuous tense। तो this passage I have written in present continuous tense। आपको दिखाई दे रहा होगा that I have written the sentences for the present continuous tense only। okay, is running, are flittering, are swimming, this way, are hiding। okay, so ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। so whenever you are describing something, the tense is very much important। okay, जो tense होता है वो बहुत important होता है। if some activity is going on, यहाँ पे देखो hide and seek चल रहा है, so for that you have to use present continuous tense। okay, तो इस तरह से यू हैव टू प्रिपेयर योर डिस्क्रिप्शन। नो डाउट वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सेम थिंग इन अवर जूम लेक्चर। अभी के लिए दिस सेंटेंसेस आर देयर, यू हैव टू प्रिपेयर इट, ओनली 5 or 7 you have to prepare it। okay, and you have to write the whole exercise sheet once in the notebook। notebook में भी लिखना है, ड्रॉ नहीं करना है पिक्चर को, ओनली इसके जो सेंटेंसेस है दैट यू हैव टू राइट। ओके, चलो, योर मैम इज साइनिंग ऑफ बेटा। आई होप दैट if the doubts will be there, no doubt if any doubt will be there, I will be solving the same doubts in our Zoom classes। okay, now your ma'am is signing off beta, bye bye।